हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज के क्लास के मेन डिस्कशन होगा क्या? बोलो। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कर्नाटिक वर्ड्स। पहली जो क्लास हुआ था उस पहली क्लास के बाद एंड सेकेंड क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। दैट्स मीन पहली क्लास में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट्स के बारे में और कर्नाटिक वर्ड्स के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ सिक्स स्टेट द पंजाब अंडर द रंजीत सिंह। कर्नाटिक वर्ड्स पहली जो क्लास हुआ था उस पहली क्लास के बाद एंड सेकंड क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। ओके। राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट एंड द कर्नाटिक वर्ड्स, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स एंड द शिक एम्पायर्स। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, क्या क्या हमको याद रखना चाहिए, क्या क्या हम याद रखेंगे वो भी हम देखेंगे। समझो, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट की राइज होने के बारे में बोल रहे हैं। एंड कार्नेटिक वार्स, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स और शिक एम्पायर्स। तो क्या क्या बोल रहे हैं, शिक एम्पायर के बारे में हम देखेंगे और हम देखेंगे कार्नेटिक वार्स, वार्स 1 2 3 देखेंगे कार्नेटिक वार्स की और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट देखेंगे। सो देखो, पहले राइज ऑफ द शिक स्टेट की राइज की रीजन क्या है वो हम देखेंगे। एंड देन पंजाब में रंजीत सिंह के अंडर जो एम्पायर क्रिएट हुआ था वो देखना पड़ेगा। एंड देन जाट अफगान्स, independent kingdom Mysores and the Tranvasco, okay, Trancourt and the हैदर अली के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप्स जो उसको भी हम देखेंगे। देन आएगा केरला, केरला के बारे में राइज ऑफ द ट्रावहैनकोर की राइज के बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, कार्नेटिक वॉर की और एंग्लो फ्रांस वॉर हुआ था, एज रिवलरीज है इन इंडिया में। इसका बैकग्राउंड क्या है कार्नेटिक वॉर्स के? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स, सेकंड कार्नेटिक वॉर्स एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर्स। ओके, तो देखो, राइज ऑफ द शिक स्टेट की राइज, शिक्स की रिलेशनशिप विद द मुगल्स, मुगल के साथ शिक एम्पायर की क्या रिलेशनशिप था, क्या रिलेशन था, उसके बारे में बोल रहे हैं। ओके, मेनी ऑफ द शिक गुरु सच एज गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी was tortured, were tortured and brutally killed by Mughals. Okay, tortured भी हुआ है and brutally killed हुआ है by the Mughals. Okay, by the Mughals. Done. अब subsequently Sikhism militarized themselves to oppose the Mughal dominance. Okay, to oppose the Mughal dominance. The Sikhs become a military fighting group under the sixth Guru, Guru Hargobind Singh. गुरु हरगोबिंद सिंह के अंडर में सिख्स बिकम ए मिलिट्री फाइटिंग ग्रुप। सिख क्या हुआ, एक मिलिट्री फाइटिंग ग्रुप होके निकल के आया। ओके, फाइटिंग ग्रुप होके निकल के आया। हाउएवर अंडर द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश द खालसा। ओके, खालसा 1699 the Sikhs become a military and a political force. Sikhs क्या हुए, एक मिलिट्री एंड ए पॉलिटिकल फोर्स होकर निकल के आया। द लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह, लास्ट सिख गुरु कौन था? गोविंद सिंह था। ओके, सो देखो, पहली बात तो ये, उस टाइम में मुगल से इंटीग्रेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बहुत था और डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा था। और इसी की वजह से जो डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा था, इसी की वजह से एक शिख एम्पायर भी यहाँ पर निकल के आ गया। ओके, शिख एम्पायर भी यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया और ये जो शिख एम्पायर यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया और इस शिख एम्पायर के साथ मुगल्स की रिलेशनशिप नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली बैड होगा ना, नॉर्मली अच्छा नहीं होगा शिख्स का रिलेशनशिप। तो इसी की वजह से एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया है, क्या बोला है वहां पर कि मेनी शिख गुरु जो था, स्पेशली गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, क्या नहीं मिल रहा में, गुरु अर्जुन देव जी एंड गुरु तेग बहादुर जी, इसको टॉर्चर किया गया।
ओके, एंड ब्रूटली किल्ड किया बाय मुगल्स, टॉर्चर्ड किया एंड ब्रूटली किल्ड किया बाय मुगल्स, ओके, एंड ब्रूटली किल्ड किया बाय मुगल्स, बाय द मुगल्स ब्रूटली किल्ड किया. Subsequently, Sikhism militarized themselves to oppose the Mughal dominance. Okay, मुगल द डोमिनेंस को अपोज किया है. दैट्स मीन क्या बोले, सिखिज्म की जो मिलिटरिस्ट है ना, वो मिलिटरिस्ट ने अपोज किया टोटली मुगल्स के डोमिनेंस को. समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट. सो मुगल मुगल के डोमिनेंस को अपोज किया. उसके बाद क्या हुआ, सिख्स बिकम ए मिलिटरी फाइटिंग ग्रुप. सिख्स हो गया एक मिलिटरी फाइटिंग ग्रुप अंडर द सिक्स गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह के अंडर में. सिक्स गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह के अंडर में फाइटिंग ग्रुप होके इमर्ज होके आया. However, under the 10th Guru, Guru Gobind Singh, and the 10th Guru, Guru Gobind Singh established किया Khalsa. Okay, and the 10th Guru, Guru Gobind Singh established किया Khalsa in the 1699, and the Sikh become a military and a political force. Sikh क्या हुआ यहाँ पर military political force हो गया. That's mean under the 10th Guru, Guru Gobind Singh एस्टेब्लिश किया गया, खालसा एस्टेब्लिश किया 1699 में. वो सिख्स बिकम ए मिलिटरी एंड पॉलिटिकल फोर्स हो गया. सिख्स एक मिलिटरी एंड पॉलिटिकल फोर्स हो गया. लास्ट सिख गुरु था गोविंद सिंह. लास्ट सिख गुरु क्या था? गोविंद सिंह. तो नेम याद रखना भाई, नेम याद रखना. लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह, एंड देन और कुछ नेम, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, ओके, अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह. ओके, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं. आप देखो, गुरु गोविंद सिंह tried to carve out an autonomous state in the around of आनंदपुर. आनंदपुर के अराउंड में एक ऑटोनोमस स्टेट कार्व किया है. एंड 1704 में आनंदपुर वाज कैप्चर्ड बाय मुगल्स. मुगल्स ने आनंदपुर को कैप्चर कर लिया. एंड द गुरु वाज compelled to leave. Okay, the Guru Gobind Singh was killed in conspiracy में गुरु गोविंद सिंह को किल कर दिया. ओके, बाय अफगान. कौन किल किया? अफगान ने किल किया. हु स्टेप्ड हिम व्हाइल स्लीपिंग. ओ माय गॉड. Stabbed him while sleeping. Thereafter, the leadership of the Mughals was passed on the Sikh military generally Baba Banda Singh Bahadur. Okay, thereafter the leadership of Mughals was passed on the Sikh military general Baba Bande Singh Bahadur. तो कौन लीडरशिप ले? बाबा बंदे सिंह बहादुर ने. वीकनिंग ऑफ द मुगल इंपीरियल अथॉरिटी. जब मुगल इंपीरियल अथॉरिटी वीक हो गया, द सीरीज ऑफ पार्शियल एंड अफगान इन्वेशन स्टार्ट हो गया. पार्शियल से अफगान से बहुत ज्यादा इन्वेशन स्टार्ट हो गया. द Marathas incursion, because of which half of the Mughal energy and resources were diverted toward the Maratha region. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? The Marathas की incursion, because of which half of the Mughal energy, okay, Marathas की incursion की वजह से half of the Mughal energy and the resources were diverted toward the Maratha region. हाँ, Maratha region के कैच कर लिया. देखो यहाँ पर देखो, तो सिख्स के साथ मुगल्स की सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था. गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर जी को बहुत टॉर्चर किया मुगल्स ने. और मुगल्स ने टोटली सिखिज्म मिलिटरी मुगल्स subsequently Sikhs militarized themselves to oppose the Mughal dominance. मुगल डोमिनेंस के अंदर भी सिख्स प्रेजेंट नहीं था. एंड देन सिख्स एक मिलिटरी एंड निकल के आया खालसा. ओके, एंड सिख बिकम द मिलिटरी एंड पॉलिटिकल फोर्सेस. एंड सिख क्या हुआ है पर मिलिटरी एंड पॉलिटिकल फोर्स होकर निकल के आया. ओके, वो निकल गया. लास्ट सिख गुरु कौन था? गोविंद सिंह था. लास्ट सिख गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह. ओके, एंड गुरु गोविंद सिंह tried to carve out an autonomous state. Okay, tried to carve out an autonomous state in around the आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट किया. एंड 1704 ने
अनंतपुर जो और अनंतपुर को कैप्चर कर लिया मुगल्स ने। देन मुगल्स ने कैप्चर करने, देन गुरु गोविंद सिंह को किल्ड, एक कॉन्स्पिरेसी में किल्ड हो गया बाय द अफगान्स while he was sleeping, and thereafter the leadership of the Mughals was passed on the Sikh military. Okay, सिख मिलिट्री जनरल बाबा बंदे सिंह बहादुर ने नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिया, सिख एम्पायर की लीडरशिप ले लिया। देन मुगल इंपीरियल अथॉरिटी जब मुगल की इंपीरियल अथॉरिटी जब वीक हो गया, सीरीज ऑफ द पार्शियन अफगान इन्वेशन स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा अफगान एंड पार्शियन इन्वेशन स्टार्ट हो गया। द मराठा इनकर्शन, बिकॉज ऑफ हुइच हाफ ऑफ द मुगल एनर्जी, मराठा बहुत ज्यादा इनकर्शन कर रहा था मुगल को, इसलिए मुगल एनर्जी बहुत, हाफ ऑफ द मुगल एनर्जी इज लॉस्ट, डाइवर्टेड टू द मराठा एम्पायर के टुवर्ड में डाइवर्ट हो गया। अब चलो नेक्स्ट, पंजाब अंडर द राजनी रंजीत सिंह, पंजाब अंडर द रंजीत सिंह के अंडर में जो पंजाब था, उस पंजाब के बारे में बोल रहे हैं। 1801 से 1839 के बीच में, 1801 से 1839 के बीच में द रंजीत सिंह चीफ ऑफ द सुकेर चाखी मिसली, okay, tried to rise a more centralized Sikh state to at the end of the 18th century. More centralized Sikh state at the end of the 18th century. Ranjit Singh ने क्या बोला? The chief of the Shukher Chaki Misli tried to rise a more centralized Sikh state at the end of the 18th century. He brought the area extending from the Sutlej to the Jhelum. ओके, ही ब्रॉड द एरिया को ब्रॉड किया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सुतलेज से झेलम के बीच में एक एरिया को एक्सटेंड किया अंडर हिम। ही कॉन्क्वर्ड लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन 1808। तो पंजाब अंडर द रंजीत सिंह के अंडर में पंजाब में क्या हुआ था, 1801 से 1839 के बीच में रंजीत सिंह जो था वो चीफ था ऑफ द चाकिया मिस्ल, शुकेर चाकिया मुस्ली की चीफ था। ट्राई टू राइज ए मोर सेंट्रलाइज सिख स्टेट, तो वो चाहते थे कि 18th सेंचुरी के एंड में वो चाहते थे कि मोर सेंट्रलाइज्ड सिख स्टेट स्टैब्लिश्ड हो, मोर सेंट्रलाइज्ड सिख स्टेट स्टैब्लिश्ड हो, वो चाहते थे। ओके, ही ब्रॉट एन एरिया, एक एरिया ब्रॉट किया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सुतलेज टू झेलम, सुतलेज से झेलम के बीच में एक एरिया लिया। ओके, ही कॉन्क्वर्ड द लाहौर को जीत लिया एंड द अमृतसर को भी जीत लिया। लाहौर एंड अमृतसर को जीत लिया, लाहौर को जीता 1799 में एंड अमृतसर को जीता 1802 में। ओके, तो ही कॉन्क्वर्ड द लाहौर एंड द अमृतसर, डन कौन, रंजीत सिंह ने। एंड ही द prospects of joint France Russian invasions, prospect of the joint France को Russian invasion of India through the land route had alarmed the English. So in 1807 में लॉर्ड मिंटो sent Charles Menclap to Lahore, and however the negotiation failed. Lord Minto sent Charles Menclap sign the Treaty of the Amritsar. ओके, रंजीत सिंह साइन किया ट्रीटी ऑफ द अमृतसर साइन किया विद द कंपनी के साथ ट्रीटी साइन कर दिया। भाई क्या कर रहा है तू? एंड द सतलेज वाज फिक्स्ड एज द बाउंड्री, सतलेज को फिक्स किया एज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सतलेज को बाउंड्री स्टैब्लिश कर दिया। He greatly modernized his army on European lines में मॉडर्नाइज के आर्मी को with the help of the European instructor की हेल्प से he greatly modernized his army on European lines, and his army was not confined to the Sikh. He recruited Gorkhas, Uriyas, Biharis, Dogra, and even Punjabi Muslims. And foundries were set up to manufacture cannon at Lahore. Foundries were set up and manufactured cannon at Lahore. And the
Tripartite Treaty of 1838 में by the end of the 1838 British forced Ranjit Singh को force किया to sign a tripartite treaty with शाहो शाहजू के बीच में साइन किया tripartite treaty को. ओके एट इंग्लिश कंपनी के बीच में, इंग्लिश कंपनी एंड शाहो सुजू के बीच में, इंग्लिश कंपनी शाहो सुजू के बीच में रंजीत सिंह ने साइन किया त्रिपाठी ट्रीटी को साइन किया. रंजीत सिंह agreed to provide pass to British troops through Punjab, enabling them to place Shaho Shuja on the throne of the Kabul. After the death of the Ranjit Singh, the power struggle ensued. It provided the Britishers opportunity to interfere into Sikh affairs, which lead to Anglo-Sikh War. इसके बाद में Anglo-Sikh War स्टार्ट हो गया. समझो फिर से. पंजाब की अंडर द रंजीत सिंह पंजाब वॉर के बारे में यहाँ पर बोल रहे. अंडर द रंजीत सिंह पंजाब वॉर के बारे में यहाँ पर बोल रहे. रंजीत सिंह द चीफ शुरचाकिया मिस्र था. ओके, ट्राई टू राइज ए मोर सेंट्रलाइज सिख स्टेट, और ट्राई कर रहा था राइज करने की मोर सेंट्रलाइज सिख स्टेट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी की एंड में ट्राई कर रहा था सिख स्टेट मोर सिख स्टेट जो है ना वो सिख स्टेट more centralized हो. and he brought the area extending from the Sutlej to Jhelum. सुतलेज से झेलम की जो एम्पायर था उस एम्पायर का टोटल एक्सटेंड कर दिया. and he conquered the Lahore and Amritsar. लाहौर और अमृतसर को भी वो जीत लिया था. and then prospect of joint फ्रांसको रशियन इन्वेशन, जब जॉइंट फ्रांस को रशियन इन्वेशन हुआ इंडिया में, द लैंड रूट में, एंड द अलार्म इन द इंग्लिश के अलार्म दे दिया. एंड 1807 में लॉर्ड मिंटो सेंट चार्लेस मिड कैल्प में ऑफ लाहौर में. हाउएवर द नेगोशिएशन फेल हो गया. उसके बाद रंजीत सिंह ने एग्रीड हो गया टू साइन द ट्रीटी ऑफ द अमृतसर जो एरिया है ना, उस अमृतसर एरिया में कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको द ट्रीटी ऑफ द अमृतसर. एंड द 25th April 1809 में, एंड द Sutlej was the fixed as the boundary between the British East India Company and the Maharashtra. फिक्स्ड हुआ जो बाउंड्री होगा सुतलेज. एंड देन he greatly modernized his army with the European lines with the help of European instructors की हेल्प में यूरोपियन लाइन्स के साथ ही ग्रेटली मॉडर्नाइज किया हिस आर्मी को, यूरोपियन आर्मी के साथ मॉडर्नाइज किया इस आर्मी को. एंड हिस आर्मी वाज नॉट कॉन्फाइंड टू हिस आर्मी. रंजीत सिंह की जो आर्मी था वो सिख के साथ कोई भी कॉन्फाइंड नहीं था. एंड ही रिक्रूटेड गोरखा को भी रिक्रूट किया. पहली बार गोरखा को रिक्रूट किया. उड़ीसा बिहारीस, डोगरास एंड इवन पंजाबी मुस्लिम्स को भी वो टोटली रिक्रूट किया. एंड फाउंडर्स वर सेट अप टू मैन्युफैक्चरिंग कैनियन एट लाहौर की कैनियन में मैन्युफैक्चर किया. एक कैनियन में लाहौर में एक मैन्युफैक्चर किया कैनियन, जो कैनियन की फाउंडेशन दे रहा था. देन आया त्रिपार्टिएट ट्रीटी. ओके, त्रिपार्टिएट ट्रीटी ऑफ 1838 में. बाय द एंड ऑफ द 1838 द ब्रिटिश फोर्स्ड रंजीत सिंह को फोर्स किया टू साइन त्रिपार्टिएट ट्रीटी को साइन करने के लिए. त्रिपार्टिएट ट्रीटी को साइन कर रंजीत सिंह को, ओके, विद द शाहो शुजा एंड इंग्लिश कंपनी शाहो शुजा के बीच में ट्रीटी पास हो, इसके लिए एग्रीड किया टू द पंजाब enabling them to place enabling them to place the Shaho Shuja on the throne of Kabul में जाने की परमिशन भी दे दिया. आफ्टर द डेथ ऑफ द रंजीत सिंह डेथ के बाद पावर स्ट्रगल एंश्योर्ड हो गया. इट प्रोवाइड द ब्रिटिशर्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इनटू द सिख अफेयर में इंटरफेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ब्रिटिशर्स को. एंड व्हिच लीड टू एंग्लो सिख वॉर. इसको बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर हो गया. अब देखो द जात के बारे में. जात एंड द अफगान. जात क्या है? जात फाउंडेशन ऑफ जाट स्टेट के फाउंडेशन हुआ है ऑफ द भारतपुर इन राजस्थान की भारतपुर में जात की फाउंडेशन हुआ है लेड सिंह. कौन लीड कर रहा था? चूड़ामैन एंड द बंदन सिंह. चूड़ामैन एंड बंदन सिंह में लीड किया है इसको.
लीड किया है। एंड द फाउंडेशन ऑफ द जाट स्टेट कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है? भारतपुर और राजस्थान, राजस्थान के भारतपुर में जाट हुआ है। सूरजमल, सूरजमल के अंडर में जाट पावर्स रिस्ट किया है, कॉल्ड द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। जाट ट्राइब के प्लेटो नेम से परिचित था। एंड द जाट उल्लासे फॉर हिज द स्टेडी इंटेलेक्ट एंड क्लियर विजन, हाउएवर हिज रीजन was short lived and his death marked at the end of the जाट स्टेट। समझ में आया? सूरजमल जाट पावर की ग्लोरी था, और सूरजमल को द प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब बोलती है। सूरजमल एक ही नेम था, सूरज भाई। एंड द जाट वर्धमान कहाँ पर? भारत, राजस्थान के भरतपुर में, याद रखना। अब आया हम अफगान। अफगान के बारे में देखो, द स्टेट ऑफ द फारूकाबाद एंड द रोहिलखंड। ओके, द स्टेट ऑफ द फारूकाबाद एंड द रोहिलखंड were a fell out of large-scale Afghan migrations in the mid-18th century because of the political and economic disruption in the Afghan। ओके, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिस्ट्रप्शन इसकी वजह से इस मिड 18 में लार्ज स्केल में माइग्रेशन हुआ है, और लार्ज स्केल में माइग्रेशन होके कहाँ पर आ गए? फारूकाबाद एंड रोहिलखंड में आ गया। फारूकाबाद, फारूकाबाद मोहम्मद खान भांगास was known as the Ahmad Khan। Muhammad Khan Bhangas as known as the Ahmad Khan। 1 minute ब्रेक, एक कॉल आया। अब देखो, तो अफगान में हम क्या बोल रहे हैं? फारूकाबाद मोहम्मद खान भांगस ऑल्सो नोन एज द अहमद खान। तो मोहम्मद खान भांगस को क्या बोलते हैं? अहमद खान भी बोलते हैं। डन। फारूकाबाद में क्या बोले? मोहम्मद खान भांगस। मोहम्मद खान भांगस जो है ना, वो ऑल्सो नोन एज द अहमद खान। अहमद खान नेम से भी परिचित है। डन। द रोहिला खंड Ali Muhammad Khan took advantage of the collapse of authority in the North India and following the Nadir Singh Shah's invasions, Nadir Shah हुआ पर था, to set up the Pitti kingdom of the Rohilkhand। Rohilkhand create किया था। Rohilkhand, the Ali Muhammad Khan, and took advantage of the collapse of authority in North India following the Nadir Shah, वही महाराठा की नादिर शाह इन्वेशन हुआ था, to set up किया a Pitti kingdom Rohilkhand। The Afghani used artillery, especially the Flin Khan, ended the dominations of the cavalry। Especially Flin Khan ended the domination of the cavalry। Done। अब देखो, independent kingdom the Mysore and the Travancore। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मैसूर, मैसूर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। Originally, viceroyalty under the Vijayanagar Empire in 16th century, with the decline of the Vijayanagar, with the empire, they declared they independent। Originally, the viceroyalty under the विजयनगर अंडर में जो viceroyalty था empire in the 18th century में, with the decline of the विजयनगर empire, विजयनगर empire decline हो गया,
डिक्लाइन हो गया, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर किया देमसेल्फ को इंडिपेंडेंट हो गए। इन द अर्ली 18th सेंचुरी में मैसूर वाज रूल्ड बाय द वादेर एंड द वेदियर किंग चिक्का कृष्ण कृष्ण राजा, two of his ministers, Nanjaraja and the Devaraja, seized power and reduced the king to mere puppet. The foundation of the Mysore की foundation जो था, foundation of the Mysore power were laid by the Hyder Ali, who was later considered by his able son Tipu Sultan. Of Hyder Ali, he has clashed with other regional power. Maratha, Nazim, Nazim था उस time, Maratha, Nazim in the English. He had clashed with the other regional power Maratha, Nazim and English. Faced Marathas raid. Okay, in the 1764 में Marathas की raid faced किया था, and 1766 में भी. Again in the 1771 में, as the Maratha recovered fast under the Peshwa Madhav Rao, he defeated British near the Madras in First Anglo War में. Okay, his most remarkable achievement was his vision to modernize his army along the European line, and this way he had been standard army among the regional power of India. He inducted the experts and established a modern arsenal Dindigan. देन आएगा टीपू सुल्तान, टीपू टीपू देखो, इंडिपेंडेंट किंगडम माइसोर अंदर ट्रांड के बारे में, माइसोर के बारे में बहुत कुछ है। माइसोर ओरिजिनली विजयनगर एम्पायर के साथ ही था माइसोर एम्पायर, लेकिन माइसोर की जो वाइसरॉयल्टी था विजयनगर के एम्पायर के साथ ही था, लेकिन उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जब विजयनगर का डिक्लाइन हो गया। तो उसके बाद 18th सेंचुरी में माइसोर वाज रूल्ड अंडर द ओदेवर किंग चिक्का कृष्ण रंजन कृष्ण कृष्ण राजा, चिक्का कृष्ण राजा के अंडर में रूल किया है, एंड द टू ऑफ हिज मिनिस्टर्स नन नन नंजा राजा प्राइम मिनिस्टर था। ओके, नंजा राजा प्राइम मिनिस्टर था, एंड देव राजा कमांडर चीफ था। सीज्ड पावर को सीज किया एंड रिड्यूस द किंग ऑफ टू ए मेरे पॉपेट, रिड्यूस द किंग ऑफ ए मेरे पॉपेट। अर्ली 18th सेंचुरी में Mysore was ruled by the Odia king चिक्का कृष्ण राजा, चिक्का कृष्ण राजा के अंडर में ओदियर था, एंड द टू ऑफ हिज मिनिस्टर नंजा राजा, एंड द देव राजा seized power and reduced the king of mere puppet The foundation of the Mysore power की जो फाउंडेशन था were laid by Hyder Ali, who was later consolidated by his able son Tipu Sultan. Hyder Ali, he had clashed with other regional powers. Regional power के साथ clash हो गया, Maratha Nizam and the English. के साथ clash हो गया regional powers. His Maratha raid 1764 में Maratha raid हुआ, 1766 में हुआ, 77 में हुआ। क्या क्या टाइम 1764, 1766 and 1771, as the Maratha recovered fast under the Peshwa Madhav Rao. पेशवा माधव राव की, हाँ पेशवा माधव राव था, पेशवा माधव राव की अंडर में मराठास रिकवर्ड किया, मराठा रेड किया 3 टाइम्स में। ओके, पेशवा माधव राव, एंड ही डिफीटेड द ब्रिटिश नियर माद्रास के पास में। ओके, माद्रास के पास में नियर द माद्रास, मराठा के बारे में बोलो, निजाम के बारे में। फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर हुआ ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश के माद्रास की नियर द माद्रास ही डिफीटेड द ब्रिटिश वॉर, हाँ ब्रिटिश को डिफीट कर दिया नियर द माद्रास के पास में ब्रिटिश को डिफीट कर दिया भाई। फर्स्ट एंग्लो वॉर हिज मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट,
मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट क्या था? ऐसे ब्रिटिश को डिफीट कर दिया, लेकिन मराठा लूट लिया, ब्रिटिश को डिफीट कर दिया। तो मोस्ट अचीवमेंट जो था, ही डिफीटेड द ब्रिटिश, ही डिफीटेड ब्रिटिश way. He had to best standing army among the regional power of India. इंडिया की रीजनल पावर के ऊपर डिपेंड करके एक बहुत स्टैंडिंग आर्मी एंड यूरोपियन लाइन में आर्मी को डेवलप किया। नहीं इंट्रोड्यूस द फ्रांस एक्सपर्ट्स एंड द एस्टैब्लिश ए मॉडर्न आर्सेनल एट द दिंडीकुल। ओके, अब हम आएंगे टीपू सुल्तान। टीपू के बारे में तो हम तो बहुत ही सुना है। ही ऑल्सो शॉट ए सनत रॉयल ऑर्डर। सनत क्या है? एक रॉयल ऑर्डर है फ्रॉम द ओटोमन खलीफ टू लेजिटिमेट हिज रूल। ओके, इसमें रॉयल ऑर्डर लिया था, सनत लिया था फ्रॉम द ओटोमन खलीफ से, इस रूल को ओटोमन खलीफ से लेजिटिमेट लिया था। दैट्स मीन ही आल्सो शोड ए सनत, सनत लिया था फ्रॉम द ओटोमन खलीफ। ओटोमन खलीफ के पास में एक लेजिटिमेट लिया था। ओके, टीपू राइज्ड एन एफिशिएंट मिलिटरी फोर्स। टीपू राइज्ड एज एन एफिशिएंट मिलिटरी फोर्स होकर टीपू राइज्ड हुआ है एंड एम्प्लॉयड फ्रांस ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज ट्रॉप्स। ओके, एम्प्लॉयड किया है फ्रांस ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयड किया है फ्रांस ऑफिसर्स को टू ट्रेन हिज ट्रॉप्स एंड इवन राइज्ड ए फ्रांस क्रॉप, इवन राइज किए फ्रांस क्रॉप्स को एंड मेड एफर्ट टू बिल्ड ए मॉडर्न नेवी, मेड effort to build a modern navy in the 1796 में to counter British expansions। तो क्या बोला है बारे में? He sought a सनत, ये सनत को सॉर्ट किया फ्रॉम द ओटोमन खलीफ, खलीफ के पास में एंड टीपू सुल्तान, टीपू राइज्ड एन एफिशिएंट मिलिटरी फोर्स, टीपू के पास एफिशिएंट मिलिटरी फोर्स था एंड एम्प्लॉयड फ्रांस ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज ट्रॉप्स। फ्रांस ऑफिसर को समझो समझो समझो, फ्रांस ऑफिसर को उसने उसने एम्प्लॉय कर दिया हिज ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए, फ्रांस ऑफिसर को। ओके, इवन राइज से फ्रांस क्रॉप एंड फ्रांस क्रॉप भी राइज कर लिया। भाई क्या बात है। मेड एफर्ट टू बिल्ड मॉडर्न नेवी, मॉडर्न नेवी भी क्रिएट करने के लिए एफर्ट दे दिया 1796 में। काउंटर ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटिश जो एक्सपेंशन हो रहा है उस ब्रिटिश एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए मॉडर्न नेवी जो है, इस मॉडर्न नेवी की एगेंस्ट में, मॉडर्न नेवी जो है इस मॉडर्न नेवी की एगेंस्ट में एक एफर्ट दे दिया। देन इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली he was very sound and understood the importance of modern trade and industry। क्या बोला है? इकोनॉमिकली क्या बोला है? he was very sound and understood, very sound था and understood था, sound and understood इकोनॉमिकली। इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉडर्न ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, इस इंपॉर्टेंस के लिए ही वेरी वेरी साउंड एंड अंडरस्टूड था एंड हेंस प्रोमोटेड बोथ इंग्लैंड एंड फॉरेन ट्रेड। प्रमोट किया कौन? पहली बार प्रमोट किया कौन? फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट किया और इंग्लैंड ट्रेड भी प्रमोट किया। इम्पोज किया टाइट गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर इट, टाइट गवर्नमेंट रेगुलेशन इम्पोज किया एंड कंट्रोल ओवर इट, इसके ऊपर कंट्रोल भी रख दिया। इम्पोज किया टाइट गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड द कंट्रोल ओवर इट, के ऊपर कंट्रोल भी रख दिया। ही इंट्रोड्यूस द कॉइनेस, कॉइनेस इंट्रोड्यूस किया, ए न्यू मौलिदी लूनियन कैलेंडर एंड न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ओके, इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ द माइसोरस सिल्क इंडस्ट्री, माइसोरस के सिल्क इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया और एक न्यू कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया। सेट अप ए नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज इन द माइसोर टेरिटरी, माइसोर टेरिटरी में बहुत नंबर ऑफ फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। दो सुगर सिल्क फैब्रिक्स, सुगर सिल्क फैब्रिक्स, ऐसे बहुत माइसोर टेरिटरी, ऐसे बहुत फैक्ट्रीज इस एरिया में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया एंड सेंड इमिशरीज टू फ्रांस, टार्की, ईरान और म्यांमार। इमिशरीज को सेंड कर दिया फ्रांस में, टर्की में, ईरान में, म्यांमार में एंड ट्राई टू सेट अप ट्रेड कंपनीज,
ट्राई किया सेट अप करो ट्रेड कंपनीज को ऑन द यूरोपियन लाइन में व्हिच डिड नॉट द फैक्टिफाई। ओके, ट्राइड किया टू सेट अप द ट्रेडिंग कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, ट्रेडिंग कंपनी सेट करने के लिए वो ट्राई किया ऑन द यूरोपियन लाइंस में व्हिच डिड नॉट द फैक्टिफाई। वर्कड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन के लिए वर्क किया एंड इंट्रोड्यूस किया सेरिकल्चर इन माइसोरे। माइसोरे में सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस हो ऐसे बोला, एग्रीकल्चर के ऊपर ही वर्क है। पहली बार ऐसे टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान इकोनॉमी का बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज था एंड ही कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंस उसने फील किया एंड हेंस promoted both inland and foreign trade। inland and foreign trade को promote भी किया but imposed tight government and regulation and control over it, and imposed किया tight government को and regulation over control over it। He introduced the coinage, a new lunar calendar, and set up a number of the factories of the Mysore territory। Mysore territory में number of factories set up किया and set up किया new calendar, introduce किया new calendar and introduce किया Mysore silk industries। and Mysore territory में बहुत ज़्यादा factories के बारे में, sugar, silk, fabric factory, and also send the emissaries को भी send किया फ्रांस में, टर्की में, ईरान में और म्यांमार में। फ्रांस, टर्की, म्यांमार में मिशनरीज को सेंड किया एंड ट्राई टू सेट अप द ट्रेडिंग कंपनीज ऑन द यूरोपियन लाइन। यूरोपियन लाइन में ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करने की ट्राई किया व्हिच डिड नॉट द फैक्टिफाई, और फैक्टिफाई नहीं करना चाहते। वर्कड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्नाइजेशन करने के बारे में बोल रहा है एंड इंट्रोड्यूस्ड सेरिकल्चर इन माइसोरेस। इंट्रोड्यूस कर रहा है सेरिकल्चर इन द माइसोरेस। ओके, इंट्रोड्यूस किया कि सेरिकल्चर इन द माइसोरेस। तो टीपू शोड केन इंटरेस्ट इन द फ्रांस रेवोल्यूशन में वो इंटरेस्ट रखते थे एंड बिलीव्ड टू हैव प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांटेड हो, ये इसकी बिलीव रखते थे। ओके, और फ्रांस रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे एंड एट द Seringapatam and become a member of the Jacobin Club and allowed himself to be addressed as a Syrian Tipu. Okay, he ruled Mysore till his death. He ruled Mysore till his death at the hand of the British. At the hand of the British 1799, where he died defending his capital during the course of Fourth Anglo-Mysore War. Fourth Anglo-Mysore Wars में कैपिटल गया। आप देखो केरला के बारे में देखो, केरला में क्या हुआ? एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th century, Kerala was divided among a large number of chief and rajas। केरला लार्ज नंबर ऑफ चीफ एंड राजेस से डिवाइड हो गया। द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट वहां पर था, कैलिकट था, अंडर द जैमोरिन के अंडर में था कैलिकट, एंड द चिरक्कल, कोचिन भी था, एंड द ट्रांसवोकोट था। ट्रांसवोकोट साउथर्न मोस्ट स्टेट था, had always maintained its independence from Mughal rules। मुगल रूल से इंडिपेंडेंट मेंटेन करके रखा था Travancore ने। And the Kerala state witnessed an invasion shock in 1766 when Hyder Ali invaded Kerala। Hyder Ali केरला को इन्वेड किया and annexed किया the Malabar and Calicut को, and Travancore was spared। The kingdom of the Travancore had its initial capital। The kingdom of the Travancore had its initial capital at the Padmanabhat। Okay, then later shift to the three। Okay, वो जो नेम्स है उस नेम के बारे में, राइज ऑफ द ट्रांसफर had risen in provinces after the 1729 under the king of the Marthanda Bharma। Marthanda Bharma के अंडर में the state had rise the provinces after the 1729 में। he reseated the Dutch को reseated किया and the ended their political power। Dutch को reseated किया and they ended their political power and in Kerala his successors Rama Bharma was a man of a great creativity and the learning, including the Western knowledge। Okay, include the Western knowledge. He covered fluently in English and regularly
regularly read newspaper published in London, Calcutta and Madras। तो बोले लंदन, कलकत्ता and Madras में published किया। he convert frequently in English and regularly read newspaper published in London, Calcutta and Madras। Okay, he was the responsible for making the Trivandrum and capital center of the scholarship and art। After his death, the state lost its glory and soon to the British pressure and the accepting the resident of the बहुत कुछ था भाई। Carnatic War, that's mean Anglo-France rivalry in India। Background of the Carnatic War: the Carnatic War was a direct result of English-France rivalry in Europe in India। There was three Carnatic wars war between the 1744 to 1763 में, and the Carnatic War included the battles over territory and the succession between the various nominal independent kings and their vassals in the Carnatic region। It was also result the direct diplomatic and military rivalry between the France and the British East India Company। Australian war successions in Europe lead to First Carnatic War। After the death of the Asaf Jahan, power struggle broke out between the wars। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में द ऑस्ट्रेलियन Austrian War of the Succession broke out in Europe after the death of the European Charles, and the inherent of the Habsburg monarchy was the major cause of the war। The British were drawn into the war into 1744 on the opposite side of the France and its allies। This led to conflict between the trading companies in India as well। The British the British Royal Navy attacked the France fleet, which led to France Governor General Dupleix calling address the force, leading to the escalation of naval forces in the area around the Madras and the Puducherry। The France fleet commander, 1 minute। ओके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशंस। ओके, Austrian Wars of Succession, Charles VI, the inherent of the Habsburg monarchy was the major cause of the war। Done. The British were drawn to the war. The British were drawn into the war 1744 May in the opposite side of the France and its allies। And this led to conflict between the trading companies in India as well। The British were drawn into the war in 1744 on the opposite side of the France, it allies. This led to conflict between the trading companies in India as well।
The British Royal Navy attacked the France fleet, which led to the France Governor General Dupleix and calling for additional force, leading to the escalation of naval forces in area around the Madras and the Puducherries. The France fleet, commanded by a La Bourdonnais, arrived to aid the Dupleix. After a few indecisive fights, the France entered the Madras and captured the outpost from the British. The British officers, including the Robert Clive, were held the captives. The British sought help from the Nawab of Arcot and Anwar Uddin, who sent out a 10,000 men army against the France, and the France force defeated Nawab's army in the Battle of the Adir. The Austrian War of the Succession came to end after the Treaty of the Restore the Peace of the Europe. Okay, Madras was returned to British in exchange for the France for capture by the British on the North America. अब चलो तो Carnatic War, second Carnatic War के background देखो, मुजफ्फर जंग देखो, फ्रांस क्या बोला, फ्रांस सपोर्ट क्या किया, ब्रिटिश क्या सपोर्ट किया, मुजफ्फर जंग ने क्या बोला, मोहम्मद अली ने क्या बोला, ब्रिटिश क्या एस्टेब्लिश किया. तो क्या बोला, क्या व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द मुजफ्फर जंग ने क्या फॉर्म किया, फ्रांस टूक इट्स इनिशिएटिव, फ्रांस क्या इनिशिएटिव लिया, फ्रांस क्या सपोर्ट किया, ब्रिटिश क्या सपोर्ट किया, मुजफ्फर जंग एंड चंद साहिब की क्या सपोर्ट किया, एंड मोहम्मद अली में क्या हुआ, फ्रांस ब्रिटिश क्या एस्टेब्लिश किया. बैकग्राउंड के बारे में जब बोलेंगे हम, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था, बैकग्राउंड में हुआ था फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड था, एंड नाजिम ऑफ हैदराबाद के बारे में बोल रहे हैं, मराठास के बारे में बोल रहे हैं, एंड नजीर जंग के बारे में बोल रहे हैं. समझ रहे हो. तो क्या बैकग्राउंड है, 1740 में बिफोर द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर द मराठास हैज इन्वेडेड द कार्नाटिक एंड किल्ड द नवाब दोस्त अली. नवाब दोस्त अली को मार दिया फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में. एंड दे ऑल्सो टूक हिज सन इन लॉ चंद साहिब एज अ प्रिजनर इन 17 में सन इन लॉ को चंद साहिब को प्रिजन में रख दिया. नाजिम ऑफ द हैदराबाद टू काम, नाजिम ऑफ हैदराबाद के नाजिम क्या है, टू काम टू द कार्नाटिक इन टू अपॉइंट द Anwar Uddin Khan in the Nawab of the Karnataka. And in 1748 में situation get worsened when the Chand Sahib released by the Marathas, and claim of the throne of the Carnatic, and in the same year death of the Nazim Asif Jaho की डेथ हो गया. Claim the throne of the Carnatic में क्लेम किया, एंड द सेम ईयर द डेथ ऑफ द नाजिम आसिफ जाहो की डेथ हो गया. ओके, Nazim was succeeded by his son the Nazir Jung, but Muzaffar Jung claimed the throne on the ground of the appointment of the Mughal Emperor. Okay, यहाँ पर मुजफ्फर जंग ने क्या किया, found an ally in the Chandra Sahib to fight together to get their respective seat in the Hyderabad and the Carnatic. The France took the initiative and the Dupleix concluded secret treaties with the Chand Sahib and the Muzaffar Jung. And the France the Chand Sahib Uddin, the Nawab of the Carnatic in the Battle of the Ambur. Muhammad Ali, son of the Anwar Uddin, fled to Trichinopoli under the British protection, and the Chand Sahib became the Nawab of the Carnatic. British established the friendship with the Nazir Jung and the Nazim of Hyderabad, and persuaded him to crush his enemies in the Carnatic and sent him
sent some help in the Muhammad Ali in the Tripoli. But the Nazir Jung attempt to crush his enemies with the result his own death हो गया. Nazir Jung death cleared away the Nazim for the Muzaffar Jung. The Chand Jaheb became the Nawab of the Carnatic and the Muzaffar Jung became the Nizam of reign as the France installed the Salah, the capital of the Arcot, and the defeated remained so until he did, and the war ended with the Treaty of the Pondicherry. Was called back the France due to the huge financial losses at the war. He was replaced by the Charles and Good Horse. यही था एक्चुअली. थर्ड कार्नाटिक वॉर में 7 years चला था. थर्ड कार्नाटिक वॉर and France at this time struggling financially, and the British soldiers took the France toward the Chandrakora. British had just won the Battle of the Plassey against the Nawab of the Bengal. France allies. The France commander Courtney Ely captured fort. The fort Steve David after the mother Dutch in Battle of the Badra and eliminating them from the scale as well. And Lally and the British occupied the because France interest in the Deccan had thus been irretrievably lost, and France were replaced by the English at the court of the Hyderabad and the Battle of the Wandis and the France capital Pondicherry, and the Third Carnatic War concluded with the signing Treaty of the Paris. So हो गया. बाद में फिर से इसको रिवाइज करेंगे. थोड़ी था, अल्प, ज्यादा नहीं था. तो समझ रही हो आप क्या मैं बोल रही हूँ. तो आज की क्लास इन करते देन हम